Hi my lovelies, hope you all are doing absolutely great. So today I'm gonna create this clean girl makeup look that you can see on my face right now. This is everywhere on the internet and it's on trend right now. So I have already made another version of it, but जो products मैं इस वीडियो में use करूँगी and जो steps मैं इस वीडियो में करूँगी वो different होने वाले हैं. And this is the look that I came up with and I am really liking the look. I can carry out this look wherever I want to go. I can just do this look. It's so simple, not gonna take so much of your time, but it's so budget friendly and as well. I'm gonna create this look by using all the makeup products between 500 and I'm gonna link them out in the description box below, so you can see this is how my face is looking with the clean girl makeup look. Yeah, watch this video till the end to know how I created this beautiful makeup look, and do not forget to subscribe my channel if you are new here. So without any further ado, let's get into the video. So guys, first I like to prep my skin using the serum. आप कोई भी सीरम लगा सकते हो जो आपकी स्किन को अच्छे से ग्लो ऐड करे एंड मॉइस्चराइज रखे. नेक्स्ट मैं लगाऊंगी आज लूमी क्रीम. यू गाइस, लूमी क्रीम इज़ रियली द हीरो ऑफ दिस लुक. इससे ही आपको वो ड्यूई फिनिश मिलेगा. सो दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. ये बहुत अच्छा ड्यूप है मैक की स्ट्रोब क्रीम का, सो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. सो नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई कंसीलर. सो कंसीलर के लिए आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी कंसीलर. इट्स अ bit expensive, not in 500, it's like around 630 or 650, but इतना तो चलता है गाइज क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर. अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप पैक कर ले सकते हो. आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So just I'm blending my concealer using this concealer brush from pack. So guys, here I'm applying foundation and I don't know how I missed the footage of the foundation where I'm showing the foundation and everything, but this is the Maybelline Fit Me foundation and मैं उसके साथ कुछ सीरम ऐड की थी. नेक्स्ट हम करेंगे अपने फेस को सेट. सो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर. सिर्फ और सिर्फ मैं अपने टी जोन को ही सेट करूँगी क्योंकि वहाँ पे मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है. So next I will do my eyebrows and this is very very essential for me and I'm gonna do it very carefully and gently, not gonna show harsh lines. So next I'm using bronzer to bronze up my face a little bit so that थोड़ी सी warmth add हो जाए. So here I'm using this bronzer by Sugar Cosmetic and the eyebrow pencil one is from I guess Elf Cosmetic. That is a really nice one. Next मैं कर रही हूँ अपने नोज़ को कंटोर, तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस NY बेस स्टिक. सो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं अपने नोज़ कंटोरिंग के लिए यूज़ करूँगी एंड और कहीं पे नहीं अप्लाई करूँगी. देन मैं शेड करूँगी थोड़ा सा ब्राउज़र लेके उसको एंड शुगर वाली ब्राउज़र लेके इसको थोड़ा सा सेट कर दूँगी ताकि जो क्रीम प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेट होके रहे. Next we are going to add some color to our face, so I'm here using my blush. This is one of my favorite blush, looks so beautiful and natural on my skin tone. You can definitely go for this one. This is from Wet n Wild. So मैं अच्छे से blush लगाऊंगी and you can clearly see blush लगाने के बाद skin बहुत ज़्यादा youthful लगती है and प्यारा लगता है to be honest. नेक्स्ट आइज़ पे थोड़ा सा वार्मथ देने के लिए आई एम यूजिंग द सेम ब्रॉन्जर क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई भी आई शेडो पैलेट अवेलेबल नहीं था बिकॉज मैं लेके नहीं गई थी. एंड आई एम गोना डू द सेम ऑन माई लोअर लैश लाइन टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वार्मथ देयर एज वेल सो दैट सब कुछ पुट टुगेदर लगे एंड मिक्स होके लगे. सो या आई एम जस्ट डूइंग दैट. So next मैं लगाऊंगी eyeliner and I'm gonna draw a very thin eyeliner because it's a clean girl makeup look and I don't think बहुत dramatic liner लगाना चाहिए. So आप कोई सा भी लगा सकते हो liner. Here I'm using this Maybelline Colossal liner. This is one of my favorite. And next I'm gonna curl my lashes and this is the important step that you have to do because बहुत ज़्यादा different हो जाता है. आप जब मस्कारा लगाते हो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. चलिए I'm using this Face Shop mascara. It looks so natural, so you can definitely try this one. बहुत अफोर्डेबल भी हो जाता है ये, 450 के अराउंड आता है आपको. सो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी हाइलाइटर. हाइलाइटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गिव दैट ग्लो टू योर स्किन. सो आई एम यूजिंग द सुगर हाइलाइटिंग पैलेट एंड लुक एट द ग्लो यू गाइज. पर्सनली आई लाइक पिंक टोन हाइलाइटर. नेक्स्ट मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लेके अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ. इससे बहुत अच्छा लुक आता है एंड ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस लिप शेड बाय सुगर एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट न्यूड शेड. तो
yeah, we are done with this clean girl makeup look, and let me know you guys like this or not. Personally, this is not my kind of a clean girl look because मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ day to day basis पे, but उसके लिए मैं I will try to make another video so that आपको पता चले कि कैसे मैं अपना makeup करती हूँ in the clean version. So yeah, this is all for this look. I hope you like this. So guys, that's it for today's video, and this is how the makeup is looking right now. And one thing that you can do, you can set the makeup using this makeup fixture or any face mist. So I'm gonna set it by using this face mist, and now your makeup will glow from within. This is all about today's video, and this is how my face is looking right now after doing this makeup, and I totally love this look. You can definitely carry out this look wherever you want, and do not forget to subscribe my channel if you are new here, and उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दो ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए. I shall see you in my next videos. Bye bye.